देवेश जी, विमन जी, पवन जी, महेश जी। एक उसके बाद हम 12-15 लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन करेंगे विद इन मिनट और 1.5 मिनट। उसका आप छोटा छोटा जवाब देती रहेंगी सबको और एंड में फिर एक बार आपको बोलना है वाइट। तो आपसे शुरू होगा, आपसे बताओ। चलो। थैंक यू सो मच देवेश जी, विमन जी, पवन जी, महेश जी, हमारा जाने माने सब बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल्स एंड civic society people, ex-judges, editors, journalists, my all cultural people from different sectors and my brothers and sisters. I am really honored and delighted to meet all of you. It is my proud privilege. I convey my humble regards to all of you. And I convey my best wishes to all of our cultural people and the society, the civic society, and also the Maharashtra, all the brothers and sisters. I think মহারাষ্ট্রচ সর্বপ্রবুদ্ধ জনতেলা মাঝে বিনম্র অভিবাদন আনি মাজিয়া হার্দিক শুভেচ্ছা। আমাদের হার্দিক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে सबको लिए। I don't want to speak more because time is too short. It will be, I like to interact with the people. Instead of giving the speech just like technical and this habit, the politicians, the habit is to give more speech, talk more, walk less. So I don't like this. I want that talk less, walk more. Only Javed ji, Kulkarni ji, Pawan ji all requested me to say something about Bengal. It is a big history. I cannot say right now all the details. But you know that we are celebrating this year, the next year also this 75 years of our independence. So Lal Bal Pal, there is a bridge between Bengal and Maharashtra. The Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak. Even Rabindranath Tagore, this Marathi, the Veer Shivaji, how Rabindranath Tagore wrote a poem in favor of Shivaji that everybody knows. So our relation is very good. We want to build up that relation. And Mumbai is a financial capital of India. You have the cultural capital also. And there is a bridge between Maharashtra and Mumbai and Calcutta. We also do the cultural festival, film festival, this Tele Academy, we have the music academy, the Lok Posha Shilpi, we give help to the 2 lakhs, more than 2 lakhs, then rural artisans, this artist, especially the pension, more than 2 lakhs artists we have. Like this in Bengal, only in a short while I can tell you that we have the free ration. What Medaji will be very happy to see. We give free ration to each and everybody. Number 2, we have the free health. Hospital is totally free. From kidney operation to heart operation, all free. Free medicine we give. And instead of that, we have one Shastra Sati project that women of the family is the empowerment. They get smart card. They can spend they can spend 5 lakhs for the family in private hospital also. We have full free education for girl child. All the government schools, colleges and universities, they get Kanyasri. And we have got #1 award for United Nations for public program. So ration is free, education is free, health is free. We give free tree plantation also. When a newborn baby born, we give a good tree so that it can also be built up and it will be useful for them. Like this, we have the scholarship for the general students, the minorities, the Christians, all. And we started Lakshmi Bhandar to empower the women. We give 500 rupees every woman of the family, so that it is a
they can spend this money for their own purpose. And who are the scheduled caste, scheduled tribes? They get 1,000. We give all the widow's pension. We give farmers every year Kishan Bandhu scheme, and 10,000 rupees we give to the Kishans. The Kishan crop insurance, it is absolutely free. Whatever the insurance, government gives. It is not the farmers. Even if the farmers died, their family also get 2 lakhs rupees. All. So we have so many programs. For students, we are giving smart card. Government is doing we have done the insurance for that. 10 lakhs up to 10 lakhs rupees for their education purpose. Even including the coaching, purchasing the books, the computer, even the training, it can be used for that also. MSME, we are the number 1 in India. Our skill level is too much, and we have so many IIT, so many ITI, Polytechnic, we have started about 300, 400, resulting in which the skill we are number 1 in India. We give 5 lakhs job from the skill training. So there are so many areas. Even e-governance, we are number 1. E-tendering, we started from panchayat to decision-making levels. There also we are number 1. So like this, there are so many areas. The minority scholarship also we are number 1. What we give to them. So like this, there are so many areas. We give free cycle to every class 9 students. Even we give laptop, not laptop, it is just 10,000 rupees to every 12th class student to purchase a smartphone or a tab. Even from school children, we give school dress, the shoes, the dress, the meal, everything. So I think we have covered all the social sector. And it is a big reforms we have done in West Bengal. Even in the world, you cannot show me a particular place. That's what we are doing. For artists, we have given this insurance. For press media, we have covered their insurance. Even COVID, whoever died, we gave 10 lakhs rupees and 1 employment also. So like this, who are the Bongo Vibhushan and Bongo Ratna, there are so many awards. For their treatment is free. We give honor to them. They take house from us. Wherever, there are so many Bengal University, so many important people are there. We have all the academy, including all Chiki, the Sautali language also. We have 15-20 academy, tribal development to industry, everywhere, cultural. We have the film festival every year. This year also we are doing. Mohesh Bhattji should have attended this Amitabh Bachchan Saurabh every year. Even Sharmila Tegar also. Tanuja Di also sometimes. Kajal also. This time also I am inviting them. And so there are so many. There is no end. Even if somebody died, they are poor. We give 2,000 rupees for their cremation purpose. Or for their samadhi purpose. Burial, that also we give. Even a lady cannot marry, she is a poor, we give 25,000 rupees for that also. Even girl child, we give full free education, but when they become 18 years old and they don't marry, they study, we give another 25,000 to their account. So like this, and other thing is, Bengal is cosmopolitan. All the people are staying from different parts of the country and the world. There is no differences, no division. We all are equal. Unity is our main strength. And that we want to do it in a manner. It's a peaceful state, lovable state, and BJP has tried so many things against us. Every day they are giving fake video and fake report.
whatever going on in Bangladesh, that also they are doing in the name of Bengal. So this is their attitude. But I can tell you that we love the human touch and humanity. Humanism is our priority. So after that, I think if you have anything to interact, I'll be happy to interact with you, though you are very important than me. I am a less important person, and you all are very important persons. And I am not from these classical societies, means typical type of classical societies, that high standard societies. I belong to a grassroots, the poor people society. And it is the country. And this is the world. So you can ask me any question, anything. पहले तो I'll try. ये मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा ये पेंटर भी हैं और ये पोइटर भी हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि आप हमारी सोसाइटी के हैं। दूसरा सवाल जो मेरे ध्यान में आया था, आपने बताया था कि बैरियल के लिए आप कुछ पेमेंट आपकी गवर्नमेंट करती है। पिछले दिनों एक मेजर बैरियल किया है आपने, तो उसका कुछ पेमेंट सरकार ने किया कि नहीं किया? इसके पहले कि हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें, मैं चाहता हूं कि विद्या चौहान जी एक बुके पेश करें। एक्चुअली बुके तो और भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर एच.के. द्विवेदी साहब, अपने श्री बत्या बासु साहब, श्रीमती वंदना यादव जी और शांतनु बासु साहब के लिए भी, लेकिन हम आपकी गाड़ी में रखवा देंगे वक्त बचाने के लिए। स्टील सर नीचे बैठिए। तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर का सेशन। और मैं महेश भट्ट साहब, आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, तो उसे मैं खुद नहीं कहूँगा, बस कहूँगा कि आप क्या कहना और क्या पूछना चाहते हैं। Bhakta ji, you are the face of hope. When we felt that we were getting engulfed in darkness, जब हमको लगा कि बिल्कुल अंधेरा ने हमको घेर लिया है and there is no hope, you ignited hope in the darkness, so you are the face of hope for us. The story of India, as I told from your platform during the KIF festival, is too diverse, too vast to be reduced to just one narrative. It's a story of 1.4 billion people, and when you try to reduce it to one narrative, you not only falsify it, you mutilate it and do a lot of harm. The problem that we face today is that the story of India is getting lost. It's high time that forces like you hear the voices of those millions of people who believed, were born to the story of India, which is a story of a plural India, a diverse India, an India which has been always very tolerant, very human. And you tell us the story as we were told when we were born in this free country. Because as of now, it is being mutilated, and it's time that you take that story and tell it to us the way our ancestors told us. But Mamta ji, बहुत important बात ये है ये समझना कि at times political party thinks that they are the story. The nation is the story. No political party is bigger than the nation.
So I think it's very important that we keep sight of this, that we are here to tell the story of the nation and the political parties or streams which will contribute to that story. Now, the question to you, madam, is how are you, who I see as the face of hope, going to protect the liberal stream from the goons of the right wing, who have imposed on us the politics of silence, who have terrorized us and intimidated us? We have lost the moral muscle, the country has lost the moral muscle. I think it's time to reinvest in that. And how are you going to put all the liberal forces together to take the might of the right wing on? Because they seem at the moment, even with your resounding victory, almost insurmountable. ये आप कैसे करेंगी? Can we not all pool our resources and sing the song of India as we were born to? So, thank you, ma'am. I think Moise is 100% correct. You have to sing for the future. You, the civic society, you have a very big role to play. India loves manpower, not muscle power. And unity in diversity is our origin. If you want to protect that, yes. Unfortunately, we are facing the cruel attitude and undemocratic attitude, unethical. And I don't know how we have been tortured by, in the name of right wing, one political party, BJP. I'm sorry to mention the name. But if we are together, I am always very confident. If you are bold, I know Moise, you have been victimized also. Saurabh is also victimized. There are so many. Somebody can open their face, somebody cannot open their face. But let us not divide the society, not divide the country. We are all one. If we want to really fight with them, let us be united. Wherever you are, speak out, bold out them. You can bold out. We can fight it out. Never say no, never say cannot. We can. And that's why instead of political party will do their jobs. But you are the main pillar of the society. You do your job also. You advise us. You people guide us. You give us the suggestion so that you control the political parties that you have to do like this and you have to save the country. Our motto is to save the country, to save the democracy. If you want to save the democracy, then we have to work together. Means your society is a big society. It cannot be left out. That's why we are here. Thank you very much. Hello. Mr. Javed Anand, he is the co-editor of Communalism Combat, and besides that he is running a very important organization, Muslim for Secular Democracy. ये Communalism Combat अगर on one side एक journal attitude है उसका communalism के खिलाफ, तो Muslim for Secular Democracy is there to fight with the right wing within the community. And they have contributed a lot and they have brought a lot of awareness within the community. I'll ask him. Madam, thank you for coming to Mumbai, for giving us this opportunity to express our admiration for you. We are, I think, among the crores of people in this country, not just in Bengal, but all over the country, who are full of admiration for what you did and the example you showed the nation in West Bengal during the assembly elections. I think not only did you kind of defeat the BJP thoroughly in West Bengal, you also showed the way to fight the BJP nationally. That is the way the BJP has to be fought, not through kind of sometimes here, sometimes there kind of politics.
So therefore, my heartfelt gratitude to you. While I heartily welcome your coming here, I also must say that some of us have a little apprehension. In Maharashtra, we were under BJP rule till not so long back, and then you are aware of the arrangement that has been arrived at between three political parties, as a result of which we are able to breathe easy in this state today. As a national leader, you obviously have an aspiration to grow, and our best wishes are with you for growth. But we are also concerned that nothing should upset this kind of arrangement that is here to bring the demons of the BJP back to Maharashtra. That is my question. No, it depends on state to state. India is a vast country. And India, there are so many multi-political system is also there. So what is going on Maharashtra, why we will be disturbing that system? That we are not. Where there is no possibility, where Congress is not going to compromise the fight, means compromise means they are not fighting the battles. There BJP is growing. There we will not allow BJP to grow. There we have to work together. Shobha Dey, another person who doesn't need an introduction, an extremely popular writer, an erudite, column writer, and she has a defective dictionary. The word fear is not in it. Thank you for those kind words, and namaskar and welcome to Mumbai, and for the opportunity to listen to you closely. It's a very critical time in India, and all of us need to be sensitized to the next election, what lies ahead, the UP elections, and of course what we are going to see. My question is simple and straightforward, and maybe only you can answer it, because you can say it like it is without hearing anything or anybody. And Mumbai is the kind of city where you can speak your mind. All of us here who have been speaking our minds, well, we're still here and we're still speaking our minds and will continue to do so. So this is the moment that I want to ask you. Who should be the next Prime Minister of India? Who? Why don't you try for yourself also? I'm not a As a citizen of this country, you can also do it. I'm not a politician, madam. I'm So very what? happy. Only politician will do that. The others also can do it. I'm very happy. You see, I am just introducing my Bratto Bosch. He is my education minister, but he is from the drama field. He is a big film star and also theatre, from the theatre. Theatre field is very popular. So if they can do it, you can also do it. You are also very popular. Madam, we are hoping that you would have said, No, I the will be matter the Prime Minister. the matter is not for Prime Minister. The matter is the great importance whether we are able to save the democracy or not. Well, within- Let us all cast vote to voice out, vote out BJP from this country. Politically. Then it will be decided who will be Prime Minister, who are not. It India depends on needs the a face, state that's level. all. We need a leader, we need a face that we can say, if not him, if not Modi, then who? So I was hoping you would say it would be yourself. Automatically the situation will Thank you. decide all this. Thank you. I don't think that Prime Minister, who will be the Prime Minister, that is the matter right now. The matter is to fight out the BJP and bolt out them. Khela hobe. Anyway, Shobha, you should not let this offer pass easily. We must we'll definitely discuss it. Girish Kuber Sahab is the editor-in-chief of Lok Satta, one of the most important newspapers of this state. और बहुत अच्छी कुछ किताबें भी जैसे महाराष्ट्र रेनेसांस इन्होंने लिखा है। कहाँ है मेरी जी? हाँ, सर। No, I have a simple question. What, Shobhaji, this is the extension of that, and being from the news field, I would like to hear some kind of a news story from you. The state question is, you used to talk about liberals being together and all that, or fight against the BJP. That's fine, it sounds fine. Will you be inviting CPI
be our aim or the Congress to have a kind of a joint front against the BJP? Because the number tells the story. 31% vis-a-vis 69%. So 31% is united and 69% easily gets divided. So what will be your strategy? Will you be open to have some kind of a understanding with Congress and other liberal parties in UP and as well as in 2024 national election? Thank you. If somebody is afraid, even they cannot take a decision. They just waste the time and allow BJP to be powerful, more and more powerful. And that is the BJP TRP. They are the TRP of BJP. We will not tolerate that. We are waiting, we are watching since 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to bail the cat. Our duty, I am a simple worker, but I want to see that BJP is out from this country, politically. And that's why whatever the situation will decide, we will do that. We are not contesting UP. Why? Because we want that there should not be any division. But if Congress is contesting against of me in Bengal, then can't I contest in Goa? Then why you are contesting against of me in Bengal every seat? CPM is also contesting in Bengal in every seat. If they can contest, I can also contest. Because I want BJP should be out. I have seen that they have been elected, and after that how government, BJP has formed the government in Goa. They were elected very much. So if these type of things are going on, then it cannot be. Politics must be, it is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bold out you. And if you are in the field, they cannot do anything. You have seen our farmers, how they win the battle. Our congratulations to them. Even I also for farmers, hunger strike, I have done 26 days hunger strike. Even Tripura, how they tortured us. How they are beating our people. Not allowing a journalist even to go. When all India level you know, wherever BJP is not there, there the journalists are safe. You tell me what is going on. Parliament journalists are not allowed. Central are not allowed. Tripura no journalist is allowed. Some people went there and they rang me up. They did please save us. Because they are beating us in the hotel itself. They are not allowing a hotel to stay. After beating, they are not giving a medicine to the people. I brought them through mobile ambulance to medical ambulance to Kolkata for treatment. So many tortured. Media is also not safe. And media is, I think that it's a second important institution. And it is a pillar to save the democracy. So media is to be very bold. I know they have tortured again Dainik Jagaran and so many patrikas, even Punoy Rai and others also. But if you people can take a stand, this media, judiciary, and especially the civic society of these people, this still can play a very, 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 very sensitive real role, and you can guide us. You tell me Joy Prakash movement, Joy Prakash Narayan's movement, Indiraji was a very powerful leader. But the message reached that emergency, emergency, emergency. He apologized in the year 1977. But people didn't excuse. Now our PM also apologized to the farmers. But message is already reached. So he won't be excused also. Please remember, people are more powerful than the leader, than the political party. So my nation is very important, and don't worry, everything will be settled in a proper time. मेरा ख्याल है सभी लोग ये जानते हैं कि शो बिजनेस में खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी वल्नरेबिलिटी बड़ी हाई होती है। किस्सा ये है कि आपने एक पिक्चर में काम किया जो किसी और ने प्रोड्यूस किए, किसी और ने पैसा लगाया, आप तो स्टेटमेंट देके कहीं चले जाते हैं और उस पे थिएटर्स में पत्थर मारे जाते हैं, स्टेट्स में पिक्चरें बैन कर दी जाती हैं, तो नुकसान
एक आदमी के स्टेटमेंट का दूसरे को होता है, तो वो डरता है कि मेरी वजह से कहीं 10 आदमियों को नुकसान न हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जो सर हथेली पे लेके घूमते हैं। तो मैं स्वरा भास्कर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक सवाल करे जो पूछना चाहती है। Hello ma'am. Hello ma'am, my name is Swara Bhaskar. I am an actor from the Hindi film industry along with many of my colleagues here. Allow me to first say, and I'm sorry I'm a little excited because I admire your spirit, your grit deeply. Thank you. Thank you for Khela Hoyeche, Didi Dekhe Deche. We are all very grateful. As Mahesh sir said, you have shown us that no one is invincible, how many ever inches their chest may be and how much ever muscle power and money power they have. I completely agree with you that the resistance to authority and fascism or whatever we want to call it is all our burden. And I assure you ma'am that everyone in this room is doing their bit. There are many older illustrious people who've spent their lives on this, but allow me to take a minute to introduce you to some of the younger people who have risked their careers and their employment and very livelihood to keep resistance in their own small way alive. Munawar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for a joke he didn't tell. But Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua who was attacked. Richa Chadda is here, Kubra Seth is here, Arpita, Ashwini sir, Avinash ji, all of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to but are forced to bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional. People ask why there is no Meryl Streep in India. There is no Meryl Streep in India because Meryl Streep could stand in front of the president-elect of her country and critique him in the harshest way and not a hair on her head was harmed. We are all unemployable today. All of us, going to jail is a reality. My father served in the Navy, he retired from the Navy. My mother is a professor. If I visit Tihar or the jail, Arthur Road jail here, it will seem like a family reunion. My friends are there. My teachers are there. People we've studied are there. This is a crazy situation for a free democratic country. I hope that you will, in the process of your growth to national influence, I hope you will also be a voice for those people, the people who don't have the power, who are vulnerable but are still resisting. And that is our hope from you, ma'am, that you and people like you who are part of the opposition, when you all come to power, you all will make sure that the rule of law and the constitution are in place even if it is to your detriment. Because as somebody said here, there is nothing greater than the nation. And in this context, I have a small question, ma'am, because Sudha Bharadwaj ji has got bail today, but 8 others haven't. I have a small question. Ma'am, what is your take on the UAPA? And if you were to come to power at the national level, what would you do with draconian laws like the UAPA specifically? Thank you. I think UAPA is not for civic society or the political or the common people. There are some laws in our country. It is because of the internal security and the security purpose and how to protect the country from the external this threat. But now it is misusing. It is misusing like anything. Even there are so many agencies, though I don't have any personal grudge. But if anything, anybody raise, certainly there will be income tax rate, or CBI, or ED, or UAPA, or so many things. I don't agree with them. And UAPA, even
in my state, it's very rare. My chief secretary is here. How many UP we have given? Huh? We don't remember. Even do you know Chhatradhar Mahato is an activist, Bedaji knows. So he was in jail. I released him. Now they have given another case UPA from Jharkhand. And बेचारा उसका परिवार का देखने का कोई नहीं है. मैंने उसको लड़का को नौकरी दिया, उसको बीवी को नौकरी दिया. How we are helping them? And we have relieved already more than 550 people who were in jail, life sentenced. And I will be happy to do for all. And UPA, it is for particular purpose, not for, you know how I fought like Tada? I tendered my resignation also for Tada. That's why when Sanjay Dutt was alive, he used to visit my house every time. He used to visit 2-3 places. One Mother Teresa, one Makali temple, and my house. Compulsory. It was his compulsion to come. But Tada was withdrawn. So I can assure you that if BJP go out and we have any opportunity, I can tell you there will be no drastic law which can be used against of the people. We want free movement. Then you can criticize me like anything. I will be very happy to do it. Sometimes the criticism gives us a light. The constructive criticism, it is shown us the way. But খেলা হয়ে গেছে না, খেলা হবে আবার। খেলা হবে, and 24 it is a year marking for খেলা হবে. And that's why you are moving here and there. Whoever is powerful, that place, let them fight. I have no problem. My one strategy. Whoever is powerful, trying to do something and with determination, devotion, let them fight there. But you are not doing anything, so you will not allow me to do anything. That is also not. Politics, there should not be any double standard games or double standard politics. We must follow a uniform policy. Thank you so much. Why don't you join politics? Very tough ladies and strong ladies. Sri Ram Pawar Saab, he is the editor-in-chief of Sakal, a very, very important newspaper. He has written a lot of books, and one of the most popular books that he has written is Modi Parwa. Parwa का मराठी में मतलब होता है पर्व। पर्व जो है इसका मतलब होता है इरा, पीरियड। बाकी का तो माने आप लोग जानते होंगे। मोदी पर्व। मेरे 2-3 सवाल है। एक तो अपोजिशन यूनिटी अगर हो जाएगी तो उसका लीडरशिप आप करना चाहेगी, एक बात। दूसरी बात, या तो जैसे जावेद साहब ने कहा कन्विंस टाइप का माहौल है, सभी ऑलरेडी कन्विंस हो चुके हैं कि ये एक डाइवर्स कंट्री है, इसकी डाइवर्सिटी जैसी तैसी रहनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सत्ता का बदल, आप एक नेशनल लीडर हैं तो उसके हिसाब से आप देखते होगी। दूसरा सवाल है कि अभी हमारी सोसाइटी मेजॉरिटी हो रही है या हो चुकी है, मत अलग अलग हो सकता है लेकिन हो चुकी है। आप देहात में जाओ, गाँव में जाओ, सीनियर अर्बन एरियाज में जाओ, पोलराइजेशन इज टोटल। तो सत्ता बदलना एक चीज़ है, इसके बारे में मेरा सवाल है कि क्या आप उसके लिए आप विपक्ष की एकजुट का या अलायंस का लीडरशिप करना चाहेगी। और ये जो दूसरी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में अब फैल चुकी है, उसके लिए आप क्या करना चाहती हो, क्या कर सकती हैं? देखिए, मैं आपका पेपर का साथ परिचित हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आई एम ए स्मॉल वर्कर। आई वांट टू कंटिन्यू एज ए वर्कर। हमने वो कहा ना, अगर हम घूमता है तो हमको देख के बहुत सारे घूमेगा। सो आई एम मूविंग हियर एंड देयर, लेट देम आल्सो। ऐसा ऐसा करके एक परिस्थिति हो जाएगा। और हम लोग डिवीजन तो कभी नहीं चाहते हैं। नैरेटिव वो करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन अगर सब मिलके हम लोग उसको नैरेटिव को
रिप्लाई दे दे। अगर वो एक कहे तो हम हजारों आदमी मिलके उसको काउंटर करे, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उसको तो आईटी टीम है, जो प्रोफेशनल टीम है, जो टीम को देके कराते हैं। इसमें ज्यादा 90% फेक है, पूरा फेक वीडियो, पूरा फेक न्यूज देता है। तो अगर हम लोग ओरिजिनली लड़ सकते हैं, हमारा स्टूडेंट्स, हमारा यंग जनरेशन, हमारा सिविक सोसाइटी, हमारा कल्चरल फील्ड, हमारा जर्नलिस्ट फील्ड, तो इतना आसानी नहीं होगा। अगर मोदी जी को भी कभी कभी डर लगता है ना, अगर इलेक्शन का टाइम में थोड़ा डीजल का प्राइस, थोड़ा पेट्रोल का प्राइस चिंतित हो जाता है, लेकिन साल भर बढ़ा के जाता है। आज किसान का जो बिल रिपील हुआ है, चर्चा नहीं होने दिया, लेकिन रिपील क्यों किया? बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्शन, एवरीबॉडी नोज दैट। So they are also afraid. Don't think that they are very safe. Only country is to be safe. चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। विश्वास रखिए। खुद अपना फाड़ों पर जो विश्वास रखते हैं ना, वो सब कुछ कर सकता है। How do I describe Mr. Ram Pandwani? ये एक single man's crusade against all kind of polarization or communalism, एक war बरसों से लड़ रहे हैं, and we are all his fan, Ram Pandwani sahab. Thank you very much for this kind introduction. I join everybody in the hall in appreciating the dynamism which Mamata Banerjee has shown in fighting against the communal forces. I have two small questions. One is that I am convinced, whatever be the situation, if there is no opposition unity, we cannot defeat BJP in 2024. That is my conviction. Now, what obstacles are to be overcome for that? It is a compulsion for all of us. We cannot say that they don't agree. We have to find a way for that. That's number one. And number two, probably that is a question which some of us should be asking. How come BJP is rising so fast? What are the other forces which are backing up BJP, which are invisible, but ideologically they are so strong, they are affecting most of the parts of our journalism, culture, media, and whatever that. I hope you people get the guess towards which organization I am saying. How that ideological indoctrination which they have seeped like a poison in our society, how that can be undone? What are your ideas about that? Because I believe unless we work at that also, in the long term, the dream of Indian nation cannot survive. Thank you. देखिए, एक परिवार में हर आदमी समान नहीं होता है। कभी कभी ये हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब एक है, एक हम नहीं मानते हैं। वो लोगों ने भी एक, जिसका नाम अब कह रहा है, एक टाइम इंदिरा गांधी को मदद दिया था, फुल सपोर्टेड इंदिरा जी। आई डोंट थिंक दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। लेकिन किसी का नैरेटिव लेके काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई राइट विंग करते हैं, तो मेरे को ये कहना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से ही पूरा हो जाएगा, उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है? हम लोग को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ साथ ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। I want that federal structure should be strong, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party.
If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. There are some regional parties in the state, they are in power. They are afraid of BJP because of CBI, ED and all. What we can fight, they cannot fight. Can you imagine, I have organized an exhibition. I have not taken 1 paisa in my account. The painting exhibition. They have given me the notice, my party. कौन कौन किया, कौन कौन खरीदा, कितना साइज था, कैसे अरे भाई, हम मिठाई बनाते हैं, हमारा मिठाई कौन खरीदता है थोड़ा याद रहता है, तो क्या हम एक एक मिठाई का हम हिसाब रखेगा, एक एक मिठाई का हम हिसाब रखेगा, खरीदता कौन है, हम ओपन एग्जीबिशन है, ओपन कंपटीशन है, पब्लिक अनाउंसमेंट करके किया, और वो रुपया में लिया भी नहीं, हम दे दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को, हम दे दिया गवर्नर से रिलीफ फंड को, हम दे दिया स्पेसिफिक सोसाइटी को, हम तो गवर्नमेंट से एक पैसे सैलरी भी नहीं लेता है, हम 7 टर्म्स एमपी थे, हमने 1 लाख करके हमको महीना में सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है, हम नहीं लेते हैं, 11 साल हम नहीं लिया, हम गवर्नमेंट में 1 पैसा सैलरी नहीं लेते हैं, और हम सर्किट हाउस में अगर रहते तो खुद अपन का पैसा देके रहते हैं। आप पूछेंगे कैसे पैसा आता है, मेरे को 105 बुक पब्लिश हो गया, 105 बुक्स आर पब्लिश्ड ऑलरेडी, आई गेट द रॉयल्टी। जो पुस्तक लिखते हैं, जावेद जी गाना गाते हैं, मैं भी म्यूजिक में ट्यून देते हैं, हम लिरिक देते हैं, उसमें भी रॉयल्टी मिलता है, वो जो रॉयल्टी मिलता है उसमें हमारा हो जाता है। हम अकेला आदमी क्या कितना लगेगा, क्या खाएगा, हम थोड़ा गोल्ड खाएगा और प्लेटिनम खाएगा, हम तो थोड़ा चावल खाएगा, नहीं तो थोड़ा रोटी दाल खाएगा, नहीं तो थोड़ा मुरमुरा खाएगा, यही तो खाएगा। और आजकल का दिन तो सब डाइटिंग करते हैं, खाते ही नहीं है, एकदम ही रात में खाते हैं, वो भी भात ना, रोटी ना, मुरमुरा ना, तो क्या कितना लगेगा, कितना चाहिए। तो इससे हम करते हैं कि हमारा एक आदत है, हम पसंद करते हैं। If you ask me what is our strategy, we will fight for all sections. Nobody will be neglected, but special attention should be given for the poor people stand. अगर पब्लिक को आप पीएम केयर फंड, आप हमको बताइए, 4 लाख करोड़ का ऊपर ले लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पैसा लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी लिया, सीएसआर में भी लिया, और इसमें कितना बड़ा स्कैंडल है, ऑडिट नहीं होगा, रिलीफ फंड में नहीं जाएगा। Nobody asks the question, where is the human rights, where is the CBI, where is the ED? और किसी को ट्रैप करके करता है, करने दो, करने दो। अगर हम जहाज में जाते हैं, कोई आदमी हम पैदल हटते हैं तो भी हमारे साथ चलते हैं, फोटो खींचते हैं, हमको पता नहीं है कौन फोटो खींचते हैं, लेकिन ये प्लान करके कर देगा, देखो इसका साथ इसका कॉन्टैक्ट है, फोटोशॉप में जाके पूरा तैयार कर देता है। हम 7A में बैठते हैं तो 15A से फोटो तुलता है जूम करके। आज का जिंदगी ऐसा हो गया है, तो इसी के लिए आप लोग को ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा, वो हमारा फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसी को नहीं भेजा नोटिस, इतना स्ट्रगल करने का बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं, और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। तो इसमें हमारा क्या ऐतराज है, किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी अच्छा काम करते हैं, हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स। यही है, यही सोचने का बात है। राजू पारुलेकर साहब ये राइटर भी हैं, बहुत पॉपुलर राइटर हैं, और बहुत पॉपुलर टीवी पर्सनालिटी हैं, एंड ही इज नोन फॉर एक्सट्रीमली इंसाइसिव इंटरव्यूज। मैं रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद। ममता जी,
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक रास्ता दिखाया, महाराष्ट्र ने एक रास्ता दिखाया, एक बंगाल ने दिखाया, फिर किसानों ने दिखाया। मैं बहुत, अब ये देश बहुत शुक्रगुजार है आपका। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, एक 2 छोटे सवाल है कि जो राजनेता है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे INI, एनसीबी हमने देखा, यहाँ पर बॉलीवुड को बहुत परेशान किया गया। ये एजेंसी पीछे लगती है, हमें नाम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बंगाल से लेकर त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र में भी और वहाँ पर जम्मू कश्मीर तक इतने बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, जिनको कुछ चाहिए नहीं, जिनको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो लड़ रहे हैं। मैंने TMC जैसी और इक्का दुक्का और पार्टी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी कोई मदद नहीं करता उनको लीगल एड के लिए, उनको मदद नहीं होती, वो जेल में रहते हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच नहीं रही है देश की। मैंने TMC के बारे में खास करके कहा क्योंकि परसों 3 जर्नलिस्ट टीम में हमारी मित्र, वो उनको पकड़ा गया त्रिपुरा में, तो पहला फोन TMC के ऑफिस से आया। हालांकि मैं आपको पर्सनली जानता नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आया TMC से, बाकी किसी पार्टी से नहीं है। तो उनको कोई मदद नहीं हो रही है, इसलिए वो सालों तक अंडर ट्रायल पड़े हुए जेल में सड़ रहे हैं। एक बात, उनके लिए कोई मदद होने वाली है या नहीं, यानी ऐसा कुछ एक प्लान पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए या नहीं? आप आगे बढ़ेगी, आप कहेगी तो फिर लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जब उनको ये लीगल एड मिलेगी, मदद मिलेगी। एक बात। और दूसरी बात, ये एक फैसिज्म है RSS बीजेपी का, जो एक मुसोलिनी और हिटलर की तरह था, जिसमें स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल साथ आए, तो एक विपरीत आइडियोलॉजी के लोग भी एक साथ आए और उनको परास्त किया। तो ये फैसिज्म खत्म होने के बाद जो भी सत्ता में आएगा, कोएलिशन आएगा, कोई भी आएगा, मेरा ये पूछना है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं बहुत छोटा था, मैंने इंदिरा जी की इमरजेंसी के टाइम तो प्राइमरी स्कूल में भी था, लेकिन ये इस तरह से जहर नहीं फैला था देश में, डिवीजन नहीं हुआ था हिंदू मुस्लिम, ये वो हमको मालूम भी नहीं था। तो ये जो हुआ है, उसके बाद ये सत्ता से जाने के बाद इनका न्यूरेमबर्ग लाइक ट्रायल होगा या नहीं होगा? ये जो अधिकारी है, जो संवैधानिक पदों पर बैठकर असंवैधानिक और इलीगल काम कर रहे हैं, चाहे ईडी में हो, चाहे एनसीबी में हो, चाहे आईटी में हो, और वो फिर जाके वो फिर MP बन रहे हैं या राज्यसभा में सेक्रेटरी बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, क्या इनकी कोई ट्रायल होगी कि नहीं होगी? ये अगर आप पहले अगर ये आश्वासन दे दें तो लोगों को भरोसा मिल जाएगा, और इन अधिकारियों के और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर रहे हैं उनके मन में डर बैठ जाएगा। ये 2 जो मेरे सवाल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, कभी कभी दिल में कुछ बोलने चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हम बाहर में नहीं कह सकते। क्यों? वो हमारा जो अपोजिशन है स्ट्रेटेजी बना लेंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाने का मौका नहीं देंगे। जब चुनाव होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब होगा, ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने, जैसा आज हम इधर में सिविक सोसाइटी का मीटिंग कर रहे हैं, अगर जावेद अख्तर जी, महेश जी, मेमन जी, पवन जी, आप लोग सब मिलके यही सिविक सोसाइटी का मीटिंग हर स्टेट में करो और हर सबको इकट्ठा कर दो, तो ये लोग डर जाएंगे। और ये बात भी है कि हम सोचता है, मैंने बहुत दिन कांग्रेस को बोला, सुना नहीं है। मैं बोला देखो, एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, मीन्स एक एडवाइजरी काउंसिल और समथिंग जो हमको एडवाइस करे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा था कुरैशी है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था, ऐसा गोपाल गांधी है, ऐसा आप लोगों ने है, ऐसे जावेद अख्तर जी है, मेमन जी है, पवन जी, कितना लोग है, कुलकर्णी जी है, बहुत सारे लोग काम किया, कितने एडिटर्स है। हम चाहते हैं एक आप लोगों ने मिलके, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में जितना इंपॉर्टेंट लोग है सिविक सोसाइटी का, मीडिया, आप उसको लेके एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए और एक कमेटी आप हम लोगों को दिशा दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिधर में जेल में कोई है, मदद कोई नहीं कर रहा है, उधर से लीगल टीम निकल जाएगा कि आप लीगल को भी रखिए
आप लॉयर को भी रखिए हॉट स्टेट से, 3-4 अच्छा जाने माने लॉयर को भी रखिए। बहुत सारे रिटायर्ड लॉयर जजेस भी है, एक्स जजेस भी है। दे कैन गिव यू द गुड गाइडेंस, द सजेशन, द एडवाइस, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर एक कुछ करेंगे, देखिए इंडिविजुअली तो आप हमको बोले हम जो मर्जी है हम करेंगे, हम तो सबको बोलता है जब डरते हैं कि हमारे इधर में चलाओ, हम देख लेते हैं, जितना भी मदद कर सकते हैं। मैं दिल्ली में भी किसी को पकड़ता है तो हम जबरानी को भी फोन किया था, हम पुनोएडा को भी फोन किया था। जो वो लोग कोई फंस जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको मदद करने का। लेकिन हर तरह और आदमी हमको भी पहचानता नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, तो इसी में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। तो अगर आप लोगों ने एक कमेटी बनाई के, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, आप लोगों ने एक कमेटी बनाई है एंड यू गो टू एवरी स्टेट एंड टेक द मेंबर फ्रॉम एवरी स्टेट। मेंबर्स तो हम आपको जितना चाहिए हम दे देंगे। ऑल द कल्चरल पीपुल, इट मे बी फ्रॉम फिल्मी वर्ल्ड, it may be from Tele Academy, it may be from this dance academy, it may be music, it may be folk, it may be Sahitya Academy, whatever it may be, Urdu Academy, everything, हिंदी भाषी एकेडमी, हम आपको जो चाहिए हम सब पूरा दे देंगे। अगर मुंबई एंड कलकत्ता फाइनेंशियल एंड कल्चरल कैपिटल, ये दोनों अगर एक साथ में आप करेंगे ना, तो आप देखो दिल्ली भी प्लेस वेरी स्ट्रॉन्ग है, वो भी आपको मदद करने चाहता है। इफ यू टेक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इतने तो आपको कम हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न हमको संभालने दो, हम देख लेंगे। तो उसको हम दे लेंगे, हम मेंबर ले लेंगे। तो ऐसा आपको करना है, इसको करने का बहुत जरूरत है। हमें जावेद जी को, जो पवन जी कुलकर्णी जी लोग, आप लोगों ने मीटिंग बोल रहा है ना, आप लोगों ने यू टेक 1 month टाइम, इट इज नॉट दैट, डोंट डू इट हार्डली। 1 महीना टाइम लीजिए, सारा जैसा भाषण दिया ऐसा स्ट्रॉन्ग यंग जनरेशन को भी ले लीजिए, लेके आप करिए। मेधा पाटकर जी तो हम कैसे पहचानता है, उन्होंने गुजरात में आंदोलन किया, नर्मदा का, महाराष्ट्र में है, उन्होंने दिल्ली में भी करता है, बंगाल में भी। हमारा किसान मूवमेंट में हम जब हंगर स्ट्राइक में थे 3-4 दफे किया था। इसके लिए हमारा कनेक्शन है। हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी भी है, तुगलो भी इधर में बैठे हैं, सब इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं। आप लोग कीजिए ना, आप लोग करने से हमको जो करना है, यू गाइड अस। पूरा हम नहीं कर सकता है, लेकिन 99% आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेधा पाटकर जी से ही रिक्वेस्ट करें हम कि वो कुछ कहें, कुछ पूछें। आपका स्वागत है। मेरा जी का जन्मदिन भी है, तुमको बधाई हो। हर दिन नया दिन। आपको तो हमने देखा है, आप भी आंदोलन जीवी ही है एक प्रकार से। आपने भू अधिग्रहण के मुद्दे पर इतनी बड़ी संघर्ष किया, फाइट दी, और आज भी आपके सांसद भी संसद के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। तो आज जो आपसे अपेक्षा है वो एक विकास की नई अवधारणा की है, जिसमें आपने जो जो योजनाओं की अभी बात की, हमने देखा है बंगाल में जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गए थे, ये लोग काफ़ी खुश हैं कि आप महिलाओं पर, आप गरीबों पर ध्यान दे रही है। और आज लेकिन जो बुनियादी परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक उद्योगों को बेचना, जो लड़ाई आपने बंगाल में लड़ी थी, हम जुड़े हुए थे उससे, वो भी एक प्रकार के कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ थी, क्योंकि कंपनियों का हमला खेती पर ही नहीं, पूरे जीविका पर, जीवन पर। तो आज आपको क्या लगता है कि ये जो रेलवे, इसमें एक बार आपने हमारे रेलवे कैटरर्स को बड़ा न्याय दे दिया, हर चीज़ चाहे बागान तक, पर BSNL, LIC सभी में जिस प्रकार से ये निजीकरण आ रहा है, सो
to really counter that strategy, which is based on that paradigm, based on globalization, liberalization and privatization, वो आपको किस प्रकार से आगे जाना, क्योंकि that will bring in irreversible change. जैसे अभी राजू भाई ने बताया कि बाद में कौन सजा दे देगा, तो ये बाद में कौन रिवर्स करेगा और कैसे करेगा, जबकि सब कुछ बेचा जा रहा है, चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं. तो आपसे ये अपेक्षा है कि उस पर आप जितना भी अभी पोजीशन लिया है, BSNL बचाओ कमेटी से मैं भी जुड़ी हूँ, इसलिए कि आप उसके आगे जाकर अभी के आने वाले चुनावी राजनीति में भी ये मुद्दा बनाएं क्या. दूसरी बात है कि आपने तो किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पाई वो, पर अभी कानून ही खत्म हो गए. तो ये जन आंदोलनों की जीत है जिसके जरिए राजनीति से जुड़ना जरूरी है. सो दैट काइंड ऑफ अलायंस जो आप इस प्रकार के डायलॉग के द्वारा भी लाना चाह रही है, आपने बहुत अच्छी सूचना दी है. तो ये बुद्धिजीवियों का श्रमजीवियों से जुड़ना, उस पर भी हमारा सवाल है कि आप अभी हम जो MSP के कानून के लिए लड़ रहे हैं, दैट शुड नॉट बी एक्चुअली मिनिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे जैसे का कहना है. तो वो अडानी अंबानी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही भयावह विषमता, गैर बराबरी सामने आती है. तो आपने इसकी भी लड़ाई का नेतृत्व करना, और बंगाल में तो आपकी मंडियां बहुत हैं, आपका प्रोक्योरमेंट ज़्यादा है, ये हमें मालूम है, पर फिर एक ऑल इंडिया लेवल पर अभी संसद के अंदर नहीं पर संसद बाह्य में जिसमें आप माहिर हैं, तो क्या आप वो करेंगे. तीसरा मुद्दा है कि जो अभी बात हो रही है गैर बराबरी की, उसके तहत हम महिलाओं की तरफ से आर्टिकल 47 को बहुत ही हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमें नशाबंदी भी चाहिए और हमें सकस आहार भी चाहिए. तो ये दो मुद्दे जुड़े हुए हैं. आज भयावह परिस्थिति है कि राज्य सरकारें शराब बेचकर पैसा कमाती है, जो गांधी जी के अनुसार पाप का पैसा था, बाबा साहब के अनुसार भी था. तो क्या आप अगले चुनाव के लिए ये भी अपने राजनीतिक एजेंडा पर ला सकती है. जो महिलाओं की आप नेता मानी जाती है, तो महिलाओं की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उससे जिंदगी बर्बाद हो रही है, और उस पर स्कूल चलाना, स्वास्थ्य केंद्र चलाना सरकार का दावा बहुत ही खोखला है. मैं आखिरी सवाल यही करूंगी कि ये इकोनॉमी में, हाँ बराबर, 3 सवाल आपका, नहीं एक ही, इससे आगे 3 नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये वेल्थ टैक्स जो सरकार आज कह रही है कि हमारे तिजोरी में पैसा नहीं है, आप अगर ये भूमिका ले लेगी कि वेल्थ टैक्स और हेरिटेज टैक्स बढ़ाएंगे तो MSP के लिए तो पैसा आएगा ही, पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी अपनी तिजोरी भरना संभव होगा. और ये जो इतनी गैर बराबरी है, विभत्स, इसको आप खुलेआम चैलेंज करेगी कि नहीं आने वाले चुनाव में, ये हमारा सवाल. देखिए, पब्लिक सेक्टर के बारे में वी आर ऑलरेडी फाइटिंग and our party stand is very clear that we don't want that public sector should be sell out like this from rail to BSNL to everything. लेकिन एक बात भी हमको ये भी सोचना चाहिए कि we have to see that more employment should be created, and that's why we need the public sector and private sector also, and industry also we need very badly. And if you don't have the industry, then how the employment will come? So it is not that we are against of anybody. अदानी अंबानी भी देश में चाहिए, किसान भी चाहिए, दोनों को समझौता करके ही देश चलते हैं. हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, पंजाबी भी चाहिए, हिंद पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. लेकिन आपको देखना है गरीब ना डिप्राइव हो, एम्प्लॉयमेंट डिप्राइव ना हो, एम्प्लॉय. इसको देखने के लिए हमारा पार्टी का स्टैंड है. ये तो नो दोला इज बाबुल सुप्रिया इज ऑल्सो दिस रितो ब्रोतो द ex-MP, he is also our INTA president. So the trade union you can form a uniform platform, and from there you can fight for the workers. Whatever is support is there, we will give you the full support. मेरे को पता है वो सब बेच रहा है, वो जाते जाते सब बेच देंगे, जाते जाते सब बेच देंगे. इसी के लिए देश ना बेच जाए, इसी के लिए हम लोग को पहले देश को रक्षा करना है, तब तो आप सबको रक्षा कर सकते हैं. पहले देश को बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ. ममता जी, मैं अब जिन साहब को मौका दे रहा हूँ,
वो एक बहुत दूसरे उससे आ रही है, आर्किटेक्ट। ये बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े पैलेसेस भी बनाते हैं। और दूसरी तरफ इनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन निवाला हक सुरक्षा समिति, जिससे शबाना भी इन्वॉल्व थी, उसमें पीके दास साहब का काम जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इज एन आर्किटेक्ट। इन्होंने एक बार 40 हज़ार आदमियों को जो बेघर थे उनको घर बना के दिए। और इनका जो सिटी प्लानिंग में इनको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग लैटिन अमेरिका तक, यूरोप तक इनको बुलाया जाता है और ये उन पर लेक्चर देते हैं, बात करते हैं। और सिटी प्लानिंग के बारे में और जो अर्बनाइजेशन एक बिल्कुल अनरूली हो रहा है उस पर ही इज़ वेरी कंसर्न। तो ये कुछ उस बारे में आपसे पूछना चाहें। नमस्कार दीदी। Thank you, Javed sir, for the introduction. I would like to know, Mamta Di, your views on the current form of urban development, which is really rooted in the idea of colonization of public assets and exclusion of more and more people from the mainstream of development. It's really rooted with these two ideas. Medhaji raised the point about privatization. But what is also shocking, Mamta ji, maybe you could answer that and your opinion on the forms of urban development. At some point, the idea of unity seems very cliche when we look at the form of urban development that we are aggressively pursuing. Because this form of urban development is breaking down cities. It's barricading people and places, both. So my question is, how do we de-barricade our cities? How do we establish that unity that we are all talking about? That's happening on one hand. But on the other hand, Mamta ji, the more serious question that is also facing us today is issues relating to environment and climate crisis. We are not only abusing people and excluding them, but we are also destroying nature. The very nature that sustains our life. To put it in a metaphorical way, we are concretizing our rivers. We're canalizing them. How do we break down these concrete structures? How can we unify our cities? How can we bring these disparate fragments together to once more talk about unity in a different urban development form? That's my question, Mamta ji. It's a very sensitive question and very important question also. And now the global warming is going on. So environment protection is one of the areas where every time we have seen, in last year in my state I have seen 4 cyclones. हमका जितना रुपया है पानी में ही चला गया। हम किसान को देते हैं तो नेक्स्ट डे फिर उसका पानी में चला जाता है। नेक्स्ट डे हमको पूरा हेल्प करना पड़ता है। हम घर बना देता है तो नेक्स्ट डे फिर घर बनाने पड़ता है। इसी के लिए रुपया भी सब जा रहा है। I told Prime Minister on that day, because for development work, I am willing to help the government of India. Whoever is the government, no problem. State and central must work together for the development purpose. I told him that when global warming is there and the situation is so worst, and environment position is also very bad. You have seen the pollution in Delhi also and some other area also. So it is better to set up an experts committee where the important people from environment world and what you say regarding urbanization and all, EPTs may not be uniformity, because one state depends on different structure, other state depends on, and जो आपको हो गया हो तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसमें तो फिर झगड़ा हो जाएगा, गोली चल जाएगा. That you cannot do. But for future planning, the experts group should be set up to see it. You are telling me about the urbanization. मैं आपको एक स्टोरी बोलूं. मैं गांव में गया. मैं देखा अर्बन एरिया में तो तब भी थोड़ा जाएगा रखता है फायर ब्रिगेड आने के लिए, एम्बुलेंस ढूंढने के लिए. रूरल में वो भी नहीं है. वो सब घर बना दे रहा है, सब पक्का हो गया. वो भी सेमी अर्बन से अर्बन हो रहा है. गांव का नजर कम आ रहा है. हम हमारा स्टेट में देखा कि ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है गांव, लेकिन गांव में कोई सिस्टम नहीं कम करते थे. जो कोई जायगा छोड़ के रखना पड़ता है, मोबाइल आने का
हॉस्पिटल का वैन आने का जायगा रखना पड़ता है, फायर ब्रिगेड घुसने का जायगा रखने पड़ता है, लेकिन वो रास्ता भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो अभी हम लोगों ने प्लानिंग शुरू किया पंचायत डिपार्टमेंट से कि पंचायत सेल्फ हो गया, जो मर्जी करते हैं, तो किसी को पूछना नहीं है। मोर डेंजरस इज कमिंग आउट फ्रॉम द विलेज ऑल्सो। सो अभी से इसको केयर लेना जरूरी है। बात आपने बढ़िया कहा, आई एम ऑल्सो सेम ओपिनियन विथ यू, लेकिन जो हो गया उसको अब नहीं तोड़ सकता है। कैन यू डिमोलिश द मुंबई सिटी? यू कैन नॉट। कैन यू डिमोलिश द ओल्डेस्ट कोलकाता सिटी? यू कैन नॉट। देन आपको साथ झगड़ा हो जाएगा, बस जो वो काम करने जाओगे तुम मरोगे। इसमें तो अच्छा है फॉर फ्यूचर क्या करना है देखो। इसके लिए एक्सपर्ट तैयार करके अभी से काम करना, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक मिड टर्म पॉलिसी में काम करना है। और ट्री प्लांटेशन ज्यादा करना है। हमारा एक दफे 4 दफे साइक्लोन हुआ, मैं अभी 5 करोड़ मैनग्रोव का पेड़ लगा दिया। वो मैनग्रोव का पेड़ उसको रुक सकता है, तो क्या करें? अभी फिर 10 करोड़ हम लगा रहा है सुंदरबन एरिया में। एक डीप फॉरेस्ट एरिया है, डीप सी एरिया है, क्या करें? हमको नेचर का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। नेचर को बचाने के लिए नेचर को ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये हम देखते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज होता है, इसको हमको ध्यान में लेना जरूरी है। थैंक यू। Richa Chadha, another film actor who has really put her career many times at risk for speaking the truth. We don't have time. I would just like to give you my compliments and say, I think we are ready for a female Prime Minister, ma'am. There are so many female Prime Minister like Indira ji, Bangladesh, Hasina. So there are so many. No, the time is right, I think, for some goddess energy. So my compliments to you for that. As a person, I feel very unfortunate that I'm young and living through this time where I feel like half of my life has been lived under a regime that directly draws inspiration from the Nazi party. I want to say that I have a few concerns about the way right now जो भी हमने डिस्कस किया वो देश की आंतरिक बातें थी, देश की इंटरनल बातें थी. We must not forget we have a very aggressive neighbor. In the past 2 years, China has moved from Bhutan to Nepal to Ladakh to everywhere. I just hope that we understand the position in which we stand today as a country. If we lose our democracy, we will become another vassal state of this very aggressive neighbor. And I hope that in the near future, whenever the time is right, we can put all differences aside and make a BJP Mukt Bharat so that we can have a strong government and we can tackle all these issues. That's all I have to say. It's a fact, I agree with you, but only for External Affairs Minister, for the sake of country. I am not going to say anything, but BJP मुक्त भारत होने से सब हो जाएगा. ममता जी को आगे जाना है, उनकी एक मीटिंग है, लेकिन इसलिए मैं बहुत माफ़ी मांग के 2-1 नाम काटने पे मजबूर हूँ. मैं बहुत कीन था कि वो लोग भी सवाल करें, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे सिर्फ 2 लोगों को मैं एंड में बोले. आई एम सो सॉरी, इट वोंट बी पॉसिबल. मैं क्या करें? एक देखिए अभी कितने ग्रेसफुली, प्लीज लिसन टू मी. अभी वहाँ कुलकर्णी साहब बैठे हैं, मैंने बहुत उनसे इंसिस्ट किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया. उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए शाहरुख जी का साथ मेरे को मीटिंग है. इज सो सीनियर मैन, ही विल बी सिटिंग फॉर मी, वो अच्छा नहीं लगेगा. तो हम सिर्फ now only 2 speakers are left now. I'm sorry जिनके नाम थे और नहीं हो पा रहा. I apologize. एक हेमंत साहब और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से कि कुछ अच्छा हाँ ठीक वही मैं अर्ज कर रहा था
तो पहले पवन जी वो अपना मेमन साहब बोल दें, उसके बाद दो। ममता जी, सबसे पहले warm welcome to Mumbai, and not just welcome, but congratulations, and we salute you, the intellectuals of Mumbai, the activists of Mumbai who are all here, very cream of Mumbai society, salutes you for having sent a message all throughout the country. ये संदेश आपने भेजा है पिछले चुनाव के बाद कि चाहे माइटी सरकार, टायरेंट सरकार अपनी सारी ताकत, सारा पैसा, सारे मंत्री, सारी एजेंसियां आपके खिलाफ लगा दें, उसके बावजूद भी आप एक एम्फैटिक विक्ट्री आज भी ला सकती है। एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए जो वेस्ट बंगाल से उभरा है। जय महाराष्ट्र, जय बांग्ला। आपका ये कहना कि लड़ते रहें ताकि हम इस टायरेंट सरकार को हटा पाए, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, Mamta ji, I would need your kind attention, has recently commented and has said that the laws that have been brought in the last 7 years are not quality laws, and therefore they are creating serious problem not only for the people of India but also for constitutional courts, because there will be a crowd of challenges to law which is consuming our time and we are not able to do justice to other matters. How serious is this one thing? पिछले 7 वर्षों में 70 कानून जो पास हुए हैं, उनमें से सिर्फ 7 कानून पर डिबेट होके उसे कमिटीज में भेजा गया और उसके बाद रिफाइन होके उसको पास किया गया। बाकी सारे कानून बहुमत के आधार पर धकेल दिए गए। आई एम अ विटनेस टू दैट। हमने देखा कि राज्यसभा में भी किस तरह से ये लोगों को कानून को नंबरों के आधार पर धकेल कर हम सब पर झोंक दिए थे। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर इंडियन सोसाइटी। नंबर 2, Justice Chandrachud's statement is more important for my friends here after having heard these grievances. He has said we must have, civil society must have strength and power to speak truth to power. Now, to speak truth to power, त्रिपुरा में नहीं उनको जाना है। 1 मिनट में भाई, त्रिपुरा में 2 यंग जर्नलिस्ट को UAPA में इसलिए लगा दिया गया कि उन्होंने एंटी माइनॉरिटी राइट्स के बारे में ट्वीट किया। She has rightly pointed out. Some others have also rightly pointed out. Memon Sahab, I'm very sorry I made some rude, but this is not done. She has to go. आप स्पीच दे रहे हैं। She is telling me let me speak for 1 minute. और उसके अलावा वो क्या कहेंगी? 1 minute. Ma'am, my only request to you is, Bangla, Maharashtra together will lead. In Maharashtra, for last 2 years, we have demonstrated that keeping BJP out, there can be a very efficient government. It will run for next 3 years. आप और शरद पवार ये 2 ताकतें अगर इकट्ठा हो जाएं, आप दोनों के पास महाराष्ट्र और बंगाल में 90 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें आज 40 सीटें उनके पास है। हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि we have to reduce them to half or less than that. How Maharashtra and Bengal can take lead. The same thing can be followed elsewhere. Thank you very much. मैंने तो पहले बोल दिया ना, बंगाल का सब महाराष्ट्र का एक अच्छा रिलेशन है। इसीलिए आई एम गोइंग टू मीट शरद जी, हम अभी जा रहा है। लेकिन कोर्ट का बारे में आपने जो बोला है, कानून का बारे में जो बोला है, ये बात सच है। बहुत सारे इलीगल कानून फोर्सफुली पास करके लिया। इसको पहले इसको देखना है, जितना भी कानून पेश किया है, इसको बाद में जो नया सरकार आएगा, वो बीजेपी हटाने का बाद उसको लॉ टू लॉ देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट परफेक्ट। पवन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। Now what remains now is to, although I am from her side, but all your behalf to, I would like to thank Mamta ji for being here, Mamta ji. I just want to say that the nichod, the nishkarsh, the essence of this interaction today is that it has given us hope and confidence that we can fight against injustice. We can fight against what is wrong. We can fight against what is unethical. And that if we resolve to do so, no force can keep us back. This is an important principle to learn, because too many people believe
that the powers that we have to oppose are invincible, and they are not. The right to freedom of speech and expression, the right to dissent, human dignity, democratic rights, these are as important as right to life, literally. And we have to fight for them. Even otherwise, some powers are very, very happy quoting our ancient past. Let them know that the Mahavakya of the Rig Veda was Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. The truth is one. Wise people call it by different names. That is the ethos of this civilization. And that is what we will seek to preserve. Thank you so much. अरे हमारा हम जावेद जी, मेमन जी, हमारा पवन जी, महेश भाट जी, सब जितना भी आप लोग जाने माने पहचान आप लोगों ने है, हम मुंबई को सैल्यूट करते हैं, महाराष्ट्र को सैल्यूट करते हैं। हम आप लोगों के पास बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमको 2-4 बात कहने का मौका दिया। आप लोगों ने भी कहा, मैंने भी सुना। मेरे को अंतिम में कहना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लेट अस टॉक लेस वर्क मोर, मीन्स यूनिटी। वी हैव टू डू द यूनिटी। लेट अस स्पीक विथ यूनिटी, लेट अस थिंक विथ यूनिटी, लेट अस give justice to the people, let us fight for the people, let us fight for the country, let us save our country, let us save our democracy. And for that reason, my last word will be unity in our strength and divide is fall. Unity in diversity is our origin. So let us say, Janagana Mana Adhinayako Jayo He, Bharato Bhakto Vidhata, Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, দ্রাবিড় উৎপল বঙ্গ, জয় মহারাষ্ট্র, জয় বেঙ্গল, জয় ভারত। Thank you very much.